and a very chilly good morning from Rishikesh. Right now I'm in the Pink Cafe, which is literally pink and very cute. So we are gonna have breakfast over here and then start our day. One thing about Rishikesh is Rishikesh has amazing cafes. So if you love varied cuisine, you must explore them. Yesterday after the Ganga Aarti, we had dinner at VJ's and we tried their pita bread and hummus. It was very yummy. Also, the view from this cafe is very enticing, I can say. I have put the vlog link for day 1 in Rishikesh in the description box. So please check it out if you have not already. Today our plan is very simple. We are going to visit the Tera Manzil temple and then we are going to enjoy a long river rafting. So after that maybe we'll check out some cafes again in the night for dinner. One more thing, if you want to book for bungee jumping over here, which is famous, please do well in advance, maybe even I can say a month before, because it is always crunched. Even we couldn't get any slots over here right now, so we are going to miss it out in this trip. This is the Swargashram road. Like we have to cross Ramjula for this. Here only we have the Paramarth Niketan. Like in the morning time it's really quiet. Normally it isn't. It's very crowded. But you can see it's very quiet. To Tera Manzil Mandir or Trimbakeshwar Mandir, but the people over here, as it's 13th floor, it's called as Tera Manzil. The road leading to the mandir is so beautiful. It's so peaceful, you can see. The Tera Manzil temple is a one big temple which has many small temples in it at each of its floor for 13 floors. There are many shops inside the Tera Manzil temple where you can buy all sorts of devotional items such as Ekmukhi Rudraksh, Japmala or Shiva statue. The view of Ganga river and Lakshman Jhula from the top is really eye-catching and something one should never miss. Rafting in the Ganga. Look at you, like this. We are going for 16 kilometers from Shivpuri till Nim Beach. Rishikesh is full of rafting points. We have booked from our hostel. आपका पैडल टकरा रहा है, उनको फॉलो करो. एक बार रुको, फिर दोबारा राउंड में फॉलो करो उनको. देखो इस तरीके से करना है, 1 2 करके पैडलिंग. चलो फ्रंट वाले करेंगे पहले दोनों एक साथ. ये थोड़ा ऊपर से पकड़ो. चलो सेकंड नंबर फॉलो करेंगे आप इनको. चलो आप यस आप दोनों करते रहो. चलिए थर्ड नंबर. यस फोर्थ है कोई नहीं है. ओके स्टॉप. ओके ऑल बैक पेडल्स, ऑल बैक. उल्टा चलाओ सब. हाथ फट लगाओ. फुल पावर. कहीं पे भागना भी होता है, रॉक से बचना होता है, वहाँ पे बैक कमान यूज होता है.
ओके डी स्टॉप, कितनी कमांड दी गई है? 5 कमांड। फर्स्ट है फॉरवर्ड, सेकंड है स्टॉप, थर्ड है बैक पेडल और फोर्थ है राइट फॉरवर्ड लेफ्ट बैक और लास्ट है एवरीबॉडी गेट डाउन। तो गेट डाउन में क्या करना होता है? पानी में कूदना होता है। नहीं, रोप पकड़ के अंदर। जी, तो रोप पकड़ के अंदर बैठना आपने। फिर कहा जाए गेट बैक सेम पोजीशन। जैसे हम अभी ऑन द रैपिड थे, वहाँ पे हमें अच्छे से पैडलिंग करना होगा। अगर हम अच्छे से पैडलिंग नहीं करेंगे तो जो वेव्स आएगा वो हमको रिटर्न करेगा, तो उसमें क्या होगा? फॉल आउट और स्लिप का चांसेस बनेगा। तो ध्यान रेडी, स्ट्रॉन्ग पैडलिंग करें और फूड इंजॉय करें। चलिए take the world and paint it red. Ooh, I paint it red. Ooh, I take the world and paint it red. Ooh, I paint it red. एक जुनून एक दीवानगी, हर तरफ paint it red. बेखुदी बेखुदी बेखुदी, हर तरफ तो 3 टाइम लाउडली, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। चलाओ चलाओ, फास्ट चलाओ जितना हो सके। कम ऑन फास्ट। Super, forward. Hey, keep rowing. कोई बात नहीं, गिरने दो। Hey, आप दो उनको अपना पैडल, आगे दो, आगे वो सब। Hey, come on, fast. Hey, fast forward. Ready? Chirmir, doom धड़ाका. Chirmir, doom धड़ाका. Chirmir, doom धड़ाका. Good. मैं भी तो देखूं कैसे गया। कुछ दिन से हम लोग पर आता है, सबको नजर आया जो दौड़ हमारी। तेरे मिल गए थे? तू नहीं बोला था हर डांगड़ो है बल। अच्छा ऊपर है ना आपको? भाई कंटन के पीछे लगे तो तू फिर से न्यूबड़ा बोला ना, मैं बता रहा हूं। इससे ना ये चीज है। Just like a picture on the wall, and now I know how to steer. I'm afraid if I should fall, yeah. It took some tears, oh, but together we were strong. And now I feel a burning beat inside my heart, and I feel alive for the first time in my life. Oh baby, I feel alive tonight. You lift me up before I fall too far. You lift me up.